व्हॉट्सअप चॅनेल व हेल्पलाईन उद्घाटन सोहळा संपन्न. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत व्हॉट्सअप चॅनेल व हेल्पलाईन नंबर याचे उद्घाटन पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य माननीय श्रीमती रश्मी शुक्ला यांच्या हस्ते सिडको ऑडिटोरियम वाशी नवी मुंबई येथे संपन्न झाला. नवी मुंबईत अंमली पदार्थ व महिला ऐवज चोरी 13 कोटीची झाली असून सायबर गुन्ह्यांमुळे 168 कोटीचे 7 महिन्यात नुकसान झाले आहे. शेअर मार्केट 42.32%, टेलिग्राफ फ्रॉड 8.39%, जॉब फ्रॉड 6.20%, कॉल मेल लिंक फ्रॉड 5.47%, क्रेडिट कार्ड 4.37% फ्रॉड झाल्यामुळे नवी मुंबई हद्दीतील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त माननीय श्री मिलिंद भारंबे साहेब यांनी विविध सायबर गुन्हे, महिलाविषयक गुन्हे, अंमली पदार्थ संबंधित गुन्हे यांना प्रतिबंध करण्याकरता जनजागृतीसाठी व्हॉट्सअप चॅनेल व हेल्पलाईन नंबरची संकल्पना राबवली आहे. त्यामध्ये महिला हेल्पलाईन नंबर 112, सायबर गुन्हे हेल्पलाईन नंबर 1930 आणि व्हॉट्सअप नंबर 8828112112 असा आहे. तसेच चॅनेलच्या माध्यमातून नागरिकांना सायबर फ्रॉड, स्कॅम, नोटीस, मानवी तस्करी, डिजिटल गिरफ्तारी यासाठी जनजागृतीचे संदेश प्रसारित केले जाणार आहेत. या कार्यक्रमात सायबर गुन्हे संबंधित लेक्चर ॲडव्होकेट प्रशांत माळी हायकोर्ट यांनी केले. महिला लैंगिक शोषणावर मार्गदर्शन ॲडव्होकेट डिमेलो हायकोर्ट मुंबई मजलिस संस्था यांनी केले. तसेच आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थेचे अविनाश मोकाशी यांनी कायद्याबद्दल माहिती दिली. तर नवी मुंबई सायबर योद्धा सुरेश मेनन यांनी नवी मुंबई व्हॉट्सअप चॅनेलद्वारे व्हॉट्सअप चॅनेलची माहिती दिली. महामुंबईसह तृप्ती भोईर, उरण. ये जो आज के जो जस्ट हमको बताना है नवी मुंबई साइबर योद्धा के बारे में आपको, राइट? तो ये नवी मुंबई साइबर योद्धा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने 2021 जब अपना कोविड चल रहा था और कोविड पे हमारा जो सब वी वर फोर्स्ड टू यूज ऑनलाइन, करेक्ट? वी वर फोर्स्ड टू यूज ऑनलाइन. तो उस टाइम पे किसी को टेक्नोलॉजी कैसा यूज करना पता था, किसी को पता नहीं था, राइट? उस वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया था. तो उस टाइम हमने सोचा था कि हम लोग सब इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, हम सब इंडस्ट्री से हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी को, गिविंग बैक टू द सोसाइटी. उस टाइम हमने नवी मुंबई साइबर योद्धा करके एक छोटा ग्रुप जो नवी मुंबई में रहते हैं, वी आर इन नवी मुंबई. पुलिस का क्या है कि उनका ट्रांसफर बदली हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ का रहवासी, रेसिडेंट, एंड वी कैन गिव support to all of us. Navi Mumbai Cyber Yodha, by the people, for the people. लोकांद्वारे लोकांसाठी, right? For us, CDAC is Center for Center for Development and Advanced Computing, Kargar. With association of them, we have conducted a 2 days training for the police on drone, anti-drone and DGCA roles on drone. आजकल ड्रोन्स तो बहुत यूज हो रहा है, मोर्चा, फेस रिकग्निशन, बहुत सारा. सो वी आर हेल्पिंग द नवी मुंबई पुलिस ऑन दैट. एनीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, जो नया नया एप्लीकेशंस बनाना है. फॉर एग्जांपल पनवेल में एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक नया फैसिलिटी चालू हुआ है नवी मुंबई पुलिस का. वी आर हेल्पिंग देम टू यूज ब्लॉकचेन टू सिक्योर द एविडेंस better other than the hash value. Last में we are also helping CDAC is also helping us. आज जो WhatsApp चैनल जो इनॉग्रेट हुआ है उसके लिए कंटेंट लगता है. हर दिन